of reaction. पहले तो ये डिस्कस करना है कि what is meant by the term rate. ठीक है, that needs to be understood. Now rate is if you observe any change with respect to time. ठीक है, and this could be any change. एक reaction है वो कितना fast हो रहा है, ठीक है, that could be termed as rate is change over time. ठीक है, and always speed वगैरह जब भी आप measure करते हो, that's a change happening. आप measure करते हो कितना quickly, how quickly that change is happening, and that change could be anything. ठीक है, that change could be a change in concentration. It could be a change in volume. Could be any change that's happening in a reaction. Color change. ठीक है, if it's a color change, then it's remember its colors are measured using a colorimeter. Similarly, you could have और क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, mass change हो सकता है, ठीक है. So lots and lots of things can change in a reaction. ठीक है, many things can change in a reaction. So you can observe any change with respect to time, and you can figure out the rate of the reaction. You can get an idea of the rate of the reaction. But in technical terms, remember rate is, especially for mathematical purposes, it doesn't really matter कि आप कौन सी change measure कर रहे हो with respect to time, as long as you are doing a fair comparison. ठीक है, if you're doing five reactions, fair comparison is कि अगर उन 5 experiments के अंदर and all of them are the same, तो उसके अंदर कोई variable आप check कर रहे होगे, and that variable could be anything कि temperature change करने से what happens to the rate of the reaction, or concentration change करने से what happens to the rate of the reaction. So as long as you're doing a fair comparison and every time the experimental conditions are exactly the same, तो it doesn't really matter आप कौन सी change measure कर रहे हो. ठीक है, change with respect to time would give you an idea कि अगर time half हो रहा है, ठीक है, उसी change के अंदर इसका मतलब है रिएक्शन की जो स्पीड है that has doubled. ठीक है, अगर टाइम जो है वो डबल लग रहा है तो उसका मतलब है रिएक्शन की स्पीड जो है that is slowing down. So most of the time what you do is कि the change is usually fixed. कि आप कहते हो कि let's say you have a reaction and Mg plus HCl are reacting and they're forming MgCl2 plus H2 gas. ठीक है, now how could you, or let's say this is also aqueous and this is a gas that's being formed. And the whole experiment is about HCl changing. You're trying to observe how would the rate of the reaction change if concentration of HCl is altered. So HCl concentration is altered. So the whole experiment is you're trying to figure out how would the rate of the reaction be affected. Now you have to ensure that keep all other variables constant whenever you're doing a fair comparison. ठीक है, now this would be things like this would be asked in P5 as well. So you have to keep all other variables constant. ठीक है, now all other variables in this case could be because you're just changing one variable and trying to figure out how the rate would be affected. All other variables could be that the size of magnesium, size of Mg pieces that you're adding, they need to be kept constant in every experiment for a fair comparison. ठीक है, pressure, temperature should not change. Temperature should be kept constant always.
because gases are being produced, तो pressure से volume of gas affect होगा, ठीक है? अगर आपने एक experiment कम pressure पे किया, एक experiment ज़्यादा pressure, so pressure should also be constant. Anyway, so basically you have to keep all other variables constant whenever you're doing an experiment. अच्छा, so how would you measure the rate of this reaction? ठीक है, that was the main question. कि आप HCl की concentration alter कर रहे हो, how would you measure the rate of the reaction? Now this reaction is probably going to happen in this way. Okay, there's going to be a conical flask. जिसके अंदर you'll be adding pieces of you'll be adding HCl, and there would be a lump or a piece or a strip of Mg that is going to be added into this HCl. And immediately when you add this, a reaction is going to start. And now you could do many things to change with respect to time measure karna, how fast this reaction happens. So one thing that you could do is you could take a tube and connect it to a gas syringe. Okay, let's say this is our rough gas syringe, and this gas syringe, okay, इसके अंदर it's a movable gas syringe, and this point is sealed. Okay, that's one. What you're going to do is you're going to measure the volume of H2 gas. But with respect to time. Okay, remember, whenever you're measuring rate, okay, WRT with respect to, everything has to be measured with respect to time. So that's one way of actually trying to figure out the rate of this particular reaction. And what would the graph look like? A change with respect to time. What would the graph look like if you plot the graph and at regular time intervals you're measuring the so at regular time intervals you're trying to measure the volume of H2 gas. Now normally what happens is reactions are faster at the beginning and then they slow down and then they become almost constant. Okay, so usually you get this graph. Reactions. So the steeper the graph is, so in the beginning the tangent is very steep and then the tangent becomes less steep. So the gradient of the graph is basically proportional, it tells you the speed of the reaction. Okay, so start में, if the volume of H2, if the change is happening very fast, there's a lot of volume of H2 being produced, there's going to be a steep gradient. And then it's going to flatten out. That means no more H2 is being produced. So that means gradient is zero. And that means the rate is zero as well. So that's one way of figuring out the rate of this particular reaction. So then there are other changes that you could actually measure for the same reaction. What you could also do is you take a beaker and you put it on a weighing balance. Okay, so you take a weighing balance and you place the beaker on top of that, and there's going to be a reading which is going to give you the mass reading, and you're going to put HCl into this beaker and you're going to put a piece of Mg. Okay, you add a piece of Mg. Immediately what would happen, bubbles of H2 gas are again going to be produced, and the H2 gas would escape. So the mass of the solution, because something is escaping, it's going out of the solution, so the mass of the solution would slowly decrease. अच्छा, इस केस में how would the graph change? ठीक है, if I plot the change with respect to time this time, so there's going to be इस axis के ऊपर there's always time when you're trying to measure speed. ठीक है, on this axis is time, and this time the graph would actually look it's going to come down. तो शुरू में mass ज़्यादा होगी and start के अंदर it would decrease very quickly and then it would eventually become constant.
ठीक है. So again, the graph is going to be really steep at the beginning. Usually it's steep at the beginning. Start के अंदर every reaction is very fast, and then slowly the gradient would start decreasing. तो इस side पे there's going to be mass in grams. ठीक है, that's going to be plotted with respect to time. And again, gradient is going to be proportional to rate. Now, one thing that you should notice is that the sign of the gradient doesn't really matter. ठीक है, उसके अंदर volume of H2 gas बढ़ रहा था, increase हो रहा था, so the gradient was positive. Gradient ऊपर की तरफ point कर रहा था. इसके अंदर mass जो है, ठीक है, it's the same experiment. We are measuring exactly the same experiment. इसके अंदर mass decrease होता जा रहा है. So the gradient is actually going down. So तो मेरे ख्याल से मैथ्स के अंदर मॉडुलस होता है, वो क्या कहता है कि जी साइन इररिलेवेंट है. ठीक है, what we are interested in is the value of the gradient. ठीक है, that's going to give you the rate. अब वो gradient नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, चेंज ऊपर बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, it doesn't really matter. ठीक है, तो this is just to give you an idea कि how a rate of a particular reaction could be measured. You could measure any change with respect to time. ठीक है, और हमने एक fair comparisons करने होते हैं. We have to investigate different variables. तो आप बाकी सारे variables constant रखते हो, you just alter that variable, and you keep looking at okay, how is the change being affected with respect to time. So that is how you measure a rate of a reaction. Just one second, let me put a boundary on top of it. As that is how you measure rate change with respect to time. Now बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं. ये हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल जो है वो हम थोड़ा डिटेल के अंदर बाद में पहले सारी चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटल पे वापस आएंगे. अभी मैंने सिर्फ एक्सप्लेन ये करना था कि हाउ डू यू मेजर रेट. अच्छा, नाउ रेट, व्हाट इज इट अफेक्टेड बाय. बल्कि उससे पहले आई सेड कि रेट इज चेंज with respect to time. ठीक है, just one second, it's board as ठीक है. अच्छा, rate is with change with respect to time. अब चेंज नेगेटिव भी हो सकती है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकती है, चेंज डिक्रीजिंग भी हो सकती है. तो द फर्स्ट थिंग, पहले तो टेक्निकली मैथमेटिकली, ठीक है, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेट इज like if you're serious about measuring rate is change in concentration with respect to change in time. Okay, how is the concentration of a particular substance, ठीक है, especially for solutions, uh, change in concentration with respect to time. That is one way of defining rate. ठीक है, in a lot of your questions rate would be defined in this way. ठीक है, लेकिन remember this कि rate could be any change with respect to time. Now when you do an experiment, let's say there's N2 reacting with H2, and let's say it's not a reversible reaction, it's forming 2NH3. Now there are a few things that need to be done, and that is कि since this is one reaction, अब यहाँ पे भी हमने Mg plus HCl था, तो this was one reaction. कभी हम H2 से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि रेट क्या है, कभी हम उसकी मास, तो मतलब you're doing different things, you're measuring different changes. Now in an experiment, if you're trying to measure the change in concentration with respect to time, like in the same experiment, you might get, using this formula, you might get different values for rate. The reason is कि equation के अंदर reactants and products, they react in different ratios. For example, अगर 1 सेकेंड के अंदर ना 1 मोल पर DM³ per second
N2 -1 is getting used up. ठीक है, तो if every second, so that's the rate with respect to N2 कि जी concentration उसकी किस तरह कम हो रही है. And remember, concentration with respect to change in concentration with respect to time, the unit is going to be mole per dm cube per second. ठीक है, नीचे टाइम आ जाएगा. अब एक ही रिएक्शन के अंदर, ठीक है, इट्स द सेम रिएक्शन, अगर आप यही चीज इन्वेस्टिगेट करोगे N2 की कॉन्सेंट्रेशन से, एंड लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल स्टांस के जी हर सेकंड ना 1 मोल डीएम क्यूब पर सेकंड N2 कम हो रहा है, और वो कम होगा, रिएक्टेंट्स ऑलवेज गेट यूज्ड अप. तो अगर ये एक रिएक्ट कर रहा है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, तो H2 कितने रिएक्ट करोगे? H2 की क्वांटिटी वुड बी 3 टाइम्स that. It would be 3 mole per dm cube per second. ठीक है, that would be the rate of decrease of H2. And remember, this reactants, they always decrease. ठीक है, ये वो ग्रेडियंट आ रहा होगा, इनके साथ माइनस साइन होगा क्योंकि वो कम हो रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम इन द सेम रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ NH3, कि अगर N2 1 मोल पर डीएम पर सेकंड कम हो रहा है, तो उधर जाके वो क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है, और वो फिर 2 बनेंगे, तो 2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. They would be NH3 would be increasing. ठीक है, so it's going to be increasing. So the point is कि even if you measure change in concentration with respect to time, तो किसकी change in concentration with respect to time? Because a reaction has many different reactants and many different products. And for everyone, the change in concentration with respect to time is going to give you a different value. क्योंकि उनका ratio, the ratio in which they are reacting is different. ये अगर 1 मोल पर डीएम क्यूब कम हो रहा है, तो ये 3 मोल पर डीएम क्यूब कम होगा. ठीक है, क्योंकि इसके 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे. So the confusion would be that if you're going and trying to measure rate with respect, you're getting different values. Now, how do you get the same value? The way you get the same value is कि divide कि जिस मर्जी रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से आप रेट निकाल रहे हो. The first one is divide change in concentration with respect to time by coefficient in the equation. ठीक है, by coefficient. What that means is if this is decreasing by 1 mole per dm cube per second, तो इसको 1 से divide कर लो, you still get 1. If this is decreasing by 3 mole per dm cube per second, तो इसको इसके coefficient से divide कर लो, 3. And if this is increasing by 2 mole per dm cube per second, तो इसको इसके coefficient से divide कर लो. And if you do that, every time you're going to get the same rate value. ठीक है, so there's a rule which is when you find a rate using this method, you try to measure the change in concentration that's happening with respect to time. So what you do is you always divide by the coefficient in the equation. क्योंकि अगर coefficient से divide नहीं करोगे, इससे निकालोगे rate different value आएगी, इससे निकालोगे rate different value आएगी, इससे निकालोगे rate, तो you'll get a different value. So you have to always divide by the coefficient in the equation ताकि वो एक uniform normalized value हो. अब मैटर नहीं करता, it doesn't matter कि आप N2 से निकालो, H2 से निकालो, NH3 से निकालो, every time you're going to get the same exact value. ठीक है, is this point clear to everyone? Arisha, is this clear? Sara, Qasim, is this clear? Musa, clear है? Yes, sir. और the second thing is वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ignore sign. ठीक है, because I've told you previously as well कि it doesn't matter कि gradient ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, चेंज जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की चेंज मेजर कर रहे हो, चेंज कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डजेंट मैटर, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम ही होगी, उसका ग्रेडियंट हमेशा माइनस में ही आ रहा होगा. ठीक है, वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा. ठीक है, सो आई कैन मेक अ ग्राफ ओवर हियर. ठीक है, सो द प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स का पहले कर लेते हैं.
नहीं प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट शुरू में और वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहे होंगे, तो उनका ग्रेडियंट, उनका ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा. And reactants on the other hand would always be coming down, eventually जीरो पे कहीं पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट ग्राफ, रिएक्शन ग्राफ. ठीक है, और सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू व्हेन यू मेजर कॉन्सेंट्रेशन. और आपको क्वेश्चंस आएंगे, उन्होंने ग्राफ दिया हुआ होगा. ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही होगी, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट की होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस साइड पे कॉन्सेंट्रेशन होगी. अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ये हमने रेट को ना थोड़ा डिफाइन कर लिया कि रेट होता क्या है. ठीक है, कि व्हाट इज रेट, उसके बारे में हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया कि रेट को मेजर किस तरह करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्लस टेक्निकली यूजुअली जो आपके क्वेश्चंस में आ रहा होगा, इट वुड बी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अच्छा, नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स डज रेट डिपेंड ऑन? Rate depends on number one, temperature. ठीक है, नाउ यू कैन बी आस्क्ड, ये ओ लेवल्स के क्वेश्चन हैं. ठीक है, ये ओ लेवल्स का पार्ट है कि व्हाट डज टेम्परेचर डू? इट इंक्रीजेस, इसको हम जल्दी से, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. एंड इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, then they're going to have more frequent. Remember the two terms that you need to use: more frequent collisions, क्योंकि पार्टिकल थोड़े ज्यादा तेज होंगे. ठीक है, हायर टेम्परेचर के ऊपर, so they're going to bump into each other more. So they're going to have more frequent collisions. Plus, they're more energetic, तो collisions जो होंगी वो ज़्यादा forceful होंगी. So more, you're going to have more effective collisions as well. ठीक है, remember that ये दोनों different terms हैं. ठीक है, तो explain करते हुए you have to mention that. Number two, pressure. अच्छा, remember for pressure pressure only matters for gases. ठीक है, सॉलिड का प्रेशर बढ़ाओगे डजंट रियली, उसके पार्टिकल्स उतने ही करीब होंगे. ठीक है, वो पहले ही टाइटली पैक्ड है, तो उनकी अरेंजमेंट वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. gases are the only thing that are actually in reality compressible. तो here's your piston. तो इसमें ऑब्वियसली गैसेस के पार्टिकल्स पहले दूर दूर है. So if you increase pressure, then they're going to come close together. So higher pressure, particles are closer together. So the only thing that's going to happen is you're going to have more frequent collisions. Effective ज़्यादा नहीं होंगी. Percentage of effective collisions would remain exactly the same, क्योंकि particles ज़्यादा energetic तो नहीं हुए ना. Particles की speed अभी भी उतनी है. ठीक है, they're not gaining kinetic energy. ठीक है, उनका temperature भी increase नहीं हुआ. They're just closer together, so you're just getting more frequent collisions. अच्छा, then number three is concentration. And remember, concentration is also solids के अंदर concentration constant होती है. Only gases, only solutions or gases. ठीक है, particles per unit volume. So higher concentration, so particles are obviously closer together. तो इसका भी pressure वाला हिसाब है. Particles are going to be closer together, so you're just going to have more frequent collisions. Then number four is
अच्छा, नंबर 4 इज फोर्थ क्या था कि कैटलिस्ट. अच्छा, व्हाट इज अ कैटलिस्ट डू? इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, जिसका हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक एग्जांपल भी किया था. इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी. होमोजेनस हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं. एंड व्हेन द activation energy is lower, the number or the frequency of collisions remains the same. ठीक है, the only thing happens is that collisions become more effective. यानी पहले भी 100 collisions हो रही थी, अभी भी 100 collisions ही हो रही हैं. The only difference is that now the chances of the reaction happening and the particles colliding and something new being formed, that increases. कि पुराने bonds तोड़ना थोड़े से आसान हो जाते हैं. So you get more frequent, more effective collisions. ठीक है, reaction successful होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं. And the last one is surface area, which is, so the last one is surface area. Now surface area is कि उसका सिंपल है, पाउडर हैज मोर सरफेस एरिया, तो उसके ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजंस होंगी. अच्छा, सो यू गोइंग टू गेट मोर इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पार्टिकल्स अभी भी उतने ही एनर्जेटिक होंगे. दे जस्ट हैव मोर फ्रीक्वेंट कोलिजंस. ठीक है, पाउडर का सरफेस ज्यादा एक्सपोज होती है, सो देयर मोर चांसेस ऑफ रिएक्शन हैपनिंग. तो ये ओ लेवल्स का था. ठीक है, बट रिमेंबर ये हमने इसलिए किया कि इफ यू आर आस्क्ड, ये फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर फर्क याद रखना. ठीक है, टेम्परेचर में दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं, प्रेशर के अंदर और कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया के अंदर भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और कैटलिस्ट के अंदर द कोलिजंस बिकम मोर इफेक्टिव. ठीक है, सो दिस इज ओ लेवल्स. नेक्स्ट थिंग, now we're going to move towards order of a reaction, and we're going to try and understand what is order. So you have a reaction that's happening. ठीक है, uh, and there's, as I remember, we will only be talking about the dependence of rate and how concentration of a reaction are linked. ठीक है, this is the only factor that we would actually investigating in this chapter. हम रेट की रिलेशनशिप कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना डिटेल के अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो हम उसकी रिलेशनशिप, मतलब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, इसके अंदर वी विल नॉट बी एक्चुअली, मतलब सिर्फ इसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे. बाकियों के साथ हमारा वो हमने नहीं पढ़ना कि जी प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से क्या फर्क, मतलब मैथमेटिकली हमने उसकी डिटेल के अंदर नहीं जाना. कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, ठीक है, सो वी नॉट गोइंग इनटू देयर मैथमेटिकल डिटेल्स. हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन की आपस में रिलेशन. ठीक है, वी नो के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो तो रेट इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, so this is the only thing that we're going to try and investigate and do calculations and uski mathematical relationship hum banayenge. So you have a reaction that's going on, and let's say the reaction is this one. Okay, there's a molecule of uh, of a halogenoalkane, and it's reacting with OH ions, and products are formed. And the products that are formed are wo jo Cl that has been substituted by OH. So there's a substitution reaction that's happening. Now, there are two reactants that are involved. One of them is this one. It's a halogenoalkane. The other one is this one. Two reactants. तो आपका रेट जो होगा वो नहीं दो पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इन दोनों की कोलिजन्स होंगी तब जाके प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी OH आयंस की, CH3Cl की भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. ठीक है, देयर वुड बी
more particles, let's say इसके ये ढेर सारे particles हैं और इसके ये ढेर सारे particles हैं, तो रेट जो है वो इन दोनों की concentration भी डिपेंड कर रहा होगा. ठीक है कि ये दोनों आपस में they're going to mix up and they're going to collide with each other and they're going to form these products. So remember, rate is only dependent on the मतलब products की concentration का कोई ताल्लुक नहीं है. Products तो बने ही नहीं है. Start के अंदर तो products होंगे ही नहीं. The rate is only dependent on the concentration of the reactant. So what you could come up with is this relationship. The rate of a reaction, we know it's dependent on the concentration of the particles, right? इसके अंदर दो चीजें हैं. It would be dependent on the concentration of CH3 3Cl. उसकी concentration के ऊपर depend, concentration remember is square brackets. और OH आयन की concentration के ऊपर भी depend कर रहा होगा. ठीक है, so rate would be dependent on the concentration of two of my reactants. और नीचे मैं explicitly लिख लेता हूँ कि rate जो है that's dependent on the concentration of the reactants. उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा. But the second question is कि this relationship shows कि वो directly proportional है. Directly proportional का मतलब है कि अगर आप CH3Cl की concentration increase करो तो रेट बढ़ना चाहिए. मतलब अगर मैं इसकी concentration बढ़ा दूं, ठीक है, I make them even more tightly packed, तो वो collisions के chances, मतलब let's इन दोनों को मिला देते हैं अभी. So collisions के chances जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, ब्लू और ग्रीन जो है तो कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा. ठीक है, और सिमिलरली OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, ठीक है, उसके ब्लू वाले पार्टिकल्स जो हैं वो आप ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, मोर टाइटली पैक्ड वट एवर यू डू, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी. सो बट दिस रिलेशनशिप शोज कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ द थिंग इज कि द रिलेशनशिप इज नॉट यूजली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और इधर एक पावर आती है x and y. ठीक है, it doesn't really mean कि it's directly proportional. कभी कभार होता है कि आप इसकी concentration बढ़ाओगे तो रेट जो है वो, let's say इसकी concentration आप डबल करते हो तो रेट डबल नहीं होता, वो 4 टाइम्स हो जाता है. कभी कभार होता है कि आप इसकी concentration बढ़ाते हो और रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. कभी कभार होता है कि आप इसकी concentration बढ़ाते हो और रेट कभी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है. सो द पॉइंट इज कि the relationship is not directly proportional always. There's a relationship. Okay, rate is dependent on, but you know it's dependent on the reactant concentration. But how is it dependent? वो ये x determine करता है. That's the exponent. And this x and y, they are known as the order of a reaction. ठीक है, they are referred to as the order of the reaction. Or you can be asked about the definition of okay, what is order of the reaction. तो आप कहोगे it's the exponent of concentration of a reactant in a rate equation. ठीक है, now the question is what is a rate equation. तो ये जो हमने पूरी इक्वेशन बनाई है इसके अंदर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करना है, तो इट वुड बिकम द, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है which is going to be k. and this, ये जो रिलेशनशिप होगी ना concentration of the reactants with respect to rate और concentration का क्या आपस में रिलेशनशिप है, this entire thing is known as your rate equation. And this k over here, इसको साइड पे करें. अच्छा, so this k over here is called your rate constant. अच्छा, rate constant जो है that's remember rate constant is like a ये एक sensitivity show कर रहा होगा कि आप OH की concentration change करोगे
तो रेट कितना चेंज होगा? मतलब OH की कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2 करते हो तो K वो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। K की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो रेट में बड़ा ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, ठीक है? कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत चेंज करते हो, अगर K की वैल्यू लेट्स से बहुत छोटी है तो दैट मीन्स कि OH की कॉन्सेंट्रेशन आप जितनी मर्जी चेंज कर दो, वो K से मल्टीप्लाई होगा तो रेट के अंदर जो फर्क आ रहा होगा दैट वुड बी वेरी वेरी लेस। सो K इज काइंड ऑफ लाइक अ सेंसिटिविटी फैक्टर कि इन दोनों की रिलेशनशिप है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इस पे कितना फर्क पड़ेगा दैट्स प्रीटी मच डिटरमिन्ड बाय की। कि अगर आप इसकी डबल करते हो तो वो डबल होके K से मल्टीप्लाई होगा तो रेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? अच्छा, anyway, so this is your rate equation, this is known as your order of reaction, ठीक है? And this is your uh, relationship that you try to find out। और इससे आगे हम फिर, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सारों को? मूसा, अहमद, इज दिस क्लियर? सारा, yes or no, is this clear? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दुआ क्लियर? इधर की चैट के अंदर टाइप कर लो। अच्छा सो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, which is कि we have studied कि अच्छा यहाँ पे ना ये x और y उसी में वापस आ जाते हैं। अब इशू ये कि मैं इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? इट्स बेसिकली मतलब ये इक्वेशन क्या स्टेट कर रही है? ये स्टेट कर रही है कि जी रेट जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन OH इन कॉन्सेंट्रेशन और पावर बाय, ठीक है? कि ये नहीं पता कि किस तरह डिपेंडेंट है। तो मतलब हम इस रिलेशनशिप से मतलब दो रिलेशनशिप्स बनी हुई है। रेट इज डिपेंडेंट ऑन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द अदर रिएक्टेंट। तो मैंने उसको थोड़ा सा सिंगल आउट कर लिया, उसको आइसोलेट कर लिया कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन OH कॉन्सेंट्रेशन। बस ये नहीं पता कि ये क्या है, y की वैल्यू क्या है। Now y is the order of the reaction. What does y is equal to 0 mean? If y comes out to be 0, that means कि the order is 0, ठीक है? ये जो पावर्स थी इनको मैंने ऑर्डर कहा था, ठीक है? इसका मतलब है ऑर्डर 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है रिलेशनशिप क्या हो जाएगी कि रेट is dependent on OH concentration and the power is 0। तो इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेट OH आयंस के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी रखो, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि जो मर्जी कॉन्सेंट्रेशन हो टू द पावर 0 होगा तो दैट मीन्स कि वो 1 होगा, तो उसका मतलब है रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? हर दफा वैल्यू वही आ रही होगी। सो नो मैटर व्हाट यू पुट, नो मैटर व्हाट यू टेक एज OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, इफ इट्स पावर 0, तो पावर 0 वाली चीज जो होती है वो एक्सप्रेशन से गायब हो जाती है। कि अगर ये पावर 0 होगा तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो हर दफा 1 ही आ रहा होगा। तो ये तो रेट की रिलेशनशिप के अंदर इसका कोई काम ही नहीं होगा। तो दिस रिलेशनशिप, द फर्स्ट वन, इट मींस कि रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। बात खत्म, ठीक है? कि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो जो मर्जी रखो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एंड व्हाट वुड द ग्राफ लुक लाइक? तो द ग्राफ for OH ions with respect to time would look like a straight line। ये मैं OH ions की concentration plot कर रहा हूं, it's one of my reactants, ठीक है? तो ग्रेडियंट क्या था? रेट। तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट गेट यूज्ड अप, तो हर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो रिएक्शन को स्लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस स्पीड से वो रिएक्टेंट कम हो रहा है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है? इट्स कांस्टेंट। कि कांस्टेंट का मतलब है कि मतलब एक ही स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू टाइम के OH आयंस मतलब रिएक्ट करें, ठीक है? रिमेंबर OH आयंस हमारे रिएक्टेंट्स थे, ठीक है? नाउ
Usually in normal cases the reaction would slow down. जैसे ही OH ions मतलब आपका रिएक्टेंट खत्म होना शुरू होता है ना, द रिएक्शन स्लोज डाउन. जिस तरह कोक की बॉटल आप ओपन करते हो, शुरू में बबल्स बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऐसा ऐसा बबल्स बनना कम हो जाते हैं. ठीक है, द रीजन इज कि रिएक्टेंट आर गेटिंग यूज्ड अप. लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि रिएक्टेंट खत्म भी हो रहा है, लेकिन उस जिस स्पीड से वो खत्म हो रहा है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ठीक है, बट दिस इज नॉर्मली नॉट द केस. मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर आपने अगर एक माचिस को भी जलाते हो तो शुरू में बड़ी ज्यादा आग लगती है, उसके बाद ऐसा ऐसा क्या होती है, वो आग कम होना शुरू हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता द रिएक्शन फिनिशेस. तो यूजली ग्राफ जो होते हैं उनकी शक्लें इस टाइप की होती हैं जो हमने पहले बनाई थी, कि स्टार्ट में हाइड्रोजन गैस बड़ी तेजी से बनेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बनना बंद हो जाएगी. और स्टार्ट में क्यों रिएक्शन तेज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, और रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो उनकी कोलिजन ज्यादा होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं. तो नॉर्मली यू डोंट हैव जीरो ऑर्डर. ठीक है, नॉर्मली रियल वर्ल्ड के अंदर ना यू डोंट सी जीरो ऑर्डर. ये नहीं होता कि आपने माचिस जलाई और माचिस जिस स्पीड से शुरू में जल रही थी उसी स्पीड से एंड पे भी जल रही है. ठीक है, नॉर्मली दिस इज नॉट द केस. कि कोक की बोतल आपने ओपन की है, शुरू में जिस स्पीड से बबल्स बन रहे थे ना, एंड तक उसी स्पीड से बबल्स बन रहे हैं. तो नॉर्मली रियल वर्ल्ड रिएक्शंस they're not actually zero order. ठीक है, you don't see zero order reactions. हमेशा क्या होता है कि स्टार्ट में बड़ी तेजी से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और फिर ऐसा ऐसा स्लो डाउन करना शुरू हो जाता है और एक कर्व बनती है. तो दैट इज जीरो ऑर्डर. और साथ ही, बल्कि टाइम खत्म हो गया अभी, तो जीरो ऑर्डर के ऊपर ही छोड़ देते हैं. ये हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. इज दिस क्लियर सोफा? फातिमा, इज दिस क्लियर? अहमद और कौन है? ताहा क्लियर है? मूसा, हसन? Yes, sir, clear. चलो ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस. कल फिर कंटिन्यू करते हैं. आज क्या, आज थर्सडे. अच्छा, राइट प्रेजेंट एवरीवन. अब मेक श्योर कि ये मैंने मार्क्स सेंड करने. मेक श्योर, क्योंकि कुछ पता नहीं है, मोस्ट लाइकली मे जून के एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन वो असाइनमेंट्स वगैरह प्लीज अपनी कंप्लीट करो. ठीक है, ये विंटर वेकेशन के अंदर भी आई हैव टू सेंड मार्क्स एज वेल फॉर दिस. तो मैं असाइनमेंट्स के ऊपर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट का तो मुझे कोई फायदा नहीं लगता, वो असाइनमेंट ही होती है ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है, तो एवरीवन मेक श्योर यू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स. ठीक है, एंड राइट प्रेजेंट व्हेन यू लीव. ठीक है, यू अलाउड टू लीव आफ्टर योर रिटन प्रेजेंट. ओके, अल्लाह हाफिज.